Welcome to Class 12 Physics CBSE, lecture number 6, chapter Ray Optics and Optical Instrument, subtopic 9.4 Total Internal Reflection. Here are some of the reference books: NCERT Grade 12 Physics, Modern ABC Physics, Uttam Narayan Tripathi, S. Chand, Principle of Physics by V.K. Mehta and Rohit Mehta. Subtopic Total internal reflection. Learning objectives, students will be able to explain total internal reflection, critical angle, relation between critical angle and refractive index. Basic knowledge you need to understand this topic is Snell law refraction, denser medium and rarer medium, angle of incident and angle of refraction, refractive index. So आपको अगर ये टॉपिक समझ में आना चाहिए तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन पहले से पता रहनी चाहिए. So total internal reflection यहाँ पे हम लोग एक केस स्टडी के साथ समझने की कोशिश करते हैं. So in this video, as you can see, there's a circular glass slab and a ray of light is incident. Okay, and you can see the incident ray as well as the reflected ray here. As the incident ray angle keeps on increasing, the refracted ray also keeps on increasing. Now, if you observe closely enough, you can see there is an internal reflection. There is an internal reflection here. So this internal reflection we will define first. When light ray travels from an optical denser medium to a rarer medium, at the interface, it is partially reflected back into the same medium and partially refracted to the second medium. This reflection is called the internal reflection. Let us proceed with the video further. As the angle of incident is increased more, you can see there is no more refraction and you can observe only internal reflection. So this term will be known as total internal reflection. So the phenomena of reflection of total light when the light traveling in a denser medium strikes the interface separating the denser medium and the rarer medium. So this is the rarer medium and this is my denser medium. And at an angle greater than the critical angle, so we get here total internal reflection. Okay, so that means यहाँ पे मेरा ray of जो मेरा angle of incident है वो मैं as kept on increasing, as angle of incident kept on increasing, here you can observe that this ray is in the denser medium, and there is no refraction here. There is no refraction. There's no refraction here. So what we observe here is the total internal reflection. Okay, so the new term here that arises here is critical angle. So what is this critical angle? तो हम लोग critical angle को भी हम लोग समझते हैं, ये नया term है. So the critical angle for a pair of media may be defined as the angle of incident in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. यानी कि here you will observe that the refracted ray, the angle of refraction, जब angle of refraction 90 degree हो गया, मेरा जब angle of refraction यहाँ पे exactly 90 degree हो गया, so that will be considered as the critical angle. As here, so when my refracted ray is grazing the surface, so that angle, so the angle made by the incident ray will be known as the critical angle. So here my angle of refraction
will be in this case 90 degree. ठीक है, और अगर मैं इस एंगल यानी क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा देता हूँ क्रिटिकल एंगल से, तब मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। आई होप आपको ये तीनों बेसिक टर्म समझ में आए हो। Let us go for further explanation of total internal reflection. Okay, so explanation for total internal reflection. Here we can see we have considered a surface xy separating the rarer medium, that is air, from the denser medium, that is water, as shown in the diagram. So in this case, okay, so here is my denser medium and this is my rarer medium. So as you can observe that a ray of light OA, a ray of light OA from the object O, okay, in the denser medium is incident normally on the surface of separation, gets refracted into the rarer medium as such as along A and A dash. Okay, the ray of light is coming from object OA, in the denser medium, incident normally on the surface of separation, gets refracted into the rarer medium as such along A and A dash. Now, if I ask you what is the angle of incidence and angle of refraction, in this case, the angle of incident is equal to angle of refraction, which is equal to 0 degree. Okay? Now, another ray of light is incident. Another ray of light is incident along the oblique path OB, is refracted away from the normal along the path B and B dash in the rarer medium. As we know that whenever the speed of light is increases, it moves away from the normal. Since the ray of light is traveling from denser medium to the rarer medium, my ray of light is moving away from the normal. Okay, so in this case, angle of incident is less than critical angle. Now, as the angle of incident is increased, the angle of refraction also increase, and you can observe here, since here in this case the angle of incident is equal to the critical angle, the refracted ray grazes along the surface, okay, as the angle of incident is equal to the critical angle, the refracted ray grazes along the surface. So in this case, the angle of refraction is 90 degree. Okay, it's just
90 degree. Now, if I increase further, you can see here, that means the angle of incident is now greater than the critical angle. In this case, I will not be getting any refracted ray, but now I will be getting reflected ray here. Okay, so if the angle of incident is further increased, there will be no refracted ray. A ray such as OD, incident at an angle greater than the critical angle, gets reflected along D and D dash. Okay, so according to the law of reflection, this phenomena is called the total interval of reflection. So in this case, according to law of reflection, I will be equal to R. Angle of incident will be equal to angle of reflection. Since we have understood the concept of total and reflection, let us see a specific condition for total interreflection. Since we have understood okay, now since we have understood the explanation of total interreflection, let us see the condition. Now we have seen the case study, we have seen an overall explanation as well here. Okay, so we put a condition, a specific condition when we will be observing total internal reflection. Okay, so the conditions here are, let us do that part. So here you can observe that कि denser medium से जो ray of light है denser medium में incident कर रहा है. Okay, that means okay यहाँ पे incident कर रहा है. So since the ray of light is moving from denser medium to rarer medium, it is moving away from the normal. Okay, so यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे हम लोगों को रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है. ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है. ठीक है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया जाता है डेंसर मीडियम पर. ठीक है, डेंसर मीडियम में किया जाता है और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो सरफेस को ग्रेज करके जाता है. ठीक है, और ऐसे केस में जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ऐसे केस में मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट से ग्रेटर हो गया क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो ऐसे टाइम मुझे मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, और सिंस इट्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ओबे करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो हमारी पहली कंडीशन ये होगी कि जो मेरा रे ऑफ लाइट है इट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ठीक है, डेंसर मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हायर रहेगा, रेयर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिवली कम रहेगा कंपेयर टू द डेंसर मीडियम. Okay, and the second condition is that the angle of incident will be in the denser medium must be greater than the critical angle for the two media in contact.
let us see the relation between critical angle and refractive index. Okay, so this is my angle of incidence and that is my angle of refraction. So for critical angle, जब भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट μ2 be the refractive index of denser medium and μ1 be the refractive index of rarer medium. Okay, so when I is equal to C, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जाता है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो उस केस में जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। सो हियर वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ व्हिच इज mu2 sin C equals to mu1 sin 90. Okay, that is nothing but sin I upon sin R equals to refractive index. तो यहाँ पे sin C, यहाँ पे हमारा sin C क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है sin C, यहाँ पे C जो है nothing is but angle of incident. Okay, तो उसके साथ जो मेरा रहेगा refractive index मैं वो mu2 में लिखूंगा, ठीक है। mu1 will be my, और जो मेरा refracted रहेगा वो मेरा mu1 रहेगा, ठीक है। So that will be represented as mu2 by mu1 equals 1 by sin C. So therefore, refractive index 2 with respect to 1 equals 1 by sin C. Okay, since हमें critical angle find करना होगा, तो हमारे पास जो relation होगा वो होगा sin C equals 1 by refractive index of the denser medium with respect to rarer medium. Okay, तो ये मेरा rarer medium 1 हुआ, ये हुआ मेरा denser medium 2. ओके, सो अगर मुझे सिर्फ एंगल C फाइंड आउट करना है तो मैं साइन इनवर्स लूंगा, तो मुझे यहाँ पे C की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो हियर mu2 raised to 1, that is this refractive index of denser medium with respect to rarer medium. Okay, so अगर ray of light, that is when the light ray is incident at an angle more than the critical angle, then instead of transmitting into the rarer medium, the light ray is reflected back into the same denser medium. Now, instead of following law of refraction, the light ray starts following the law of reflection. This phenomena is called total internal reflection. Just an example. Now, these are some of the examples or specific values of some of the medium critical angle of some transparent media with respect to air. So यहाँ पे water का है 48.75. Okay, please remember this, that it is the refractive index with respect to air. Okay, so critical angle in this case is 48.75. Crown glass with respect to air 41.14 degree. Dense flint glass is 1.65. Critical angle is 37.30 degree. Diamond is 2.42 refractive index and उसका critical angle 24.40 degree. Okay, तो usually अगर कोई question mostly आता है तो ये कुछ ऐसे specific value जो आप लोग याद रख सकते हो critical angle. Okay, let us see some now applications or total internal reflection in nature. Okay, so diamond, mirage, prism, and optical fibers. So in the case of diamond, okay, as we know that the brilliance of diamond, that it has जो इसका nature है, okay, it sparks, shiny nature जो है इसका, okay, वो क्यों है? The reason you will come to know now that it is because of total internal reflection. Okay, so the refractive index of diamond is 2.47 and the critical angle of diamond air interface is small, about 24 degree only. Okay, so the critical angle for diamond जो है वो हमारा है 24 degree. So इसका मतलब ये हो गया अगर मेरा angle of incident is greater than 24 degree तो यहाँ पे वो मुझे total internal reflection दिखाएगा. Now
the faces of diamonds are so cut that the light entering from any face falls at an angle greater than 24 degrees and suffers multiple total internal reflection before emerging from the diamond. Okay, hence the diamond sparkles when seen in the direction of emerging light. Okay, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको वापस से वो एक टैंक वाला एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरा वाटर टैंक और यहाँ पे सब ऐसा वाटर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो रे ऑफ लाइट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा और वो 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। और मैं सपोज यहाँ पे भी कहीं पे एक सरफेस है मेरा, तो जब मेरा रे ऑफ लाइट जब भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा तो मुझे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करना चालू कर देगा। क्रिटिकल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है इस केस में, सो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, और मुझे कहीं पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर मेरा इस सरफेस को भी अभी वो हिट कर रहा है, ठीक है, इस सरफेस को भी हिट कर रहा है, और इन दिस केस आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो इस केस में भी मुझे वो रिफ्लेक्टेड रे ही मिलेगा, रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे भी ऐसा कोई एक सरफेस आ गया, यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा सरफेस आ गया तो यहाँ पे भी मुझे रिफ्लेक्टेड रे ही देगा, ठीक है। तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो यहीं पे इनसाइड द टैंक ही रह गया है। तो सिमिलर कुछ ऐसा केस जो हो रहा है वो डायमंड में आपको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से डायमंड स्पार्कल्स, और वी आल्सो से द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। Okay, so the next topic is Mirage. So as we know that we observe Mirage, that is an optical illusion, mostly in desert area during hot summer days. So this is the normal condition. So in this condition, this is the normal condition, and यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मिराज वाली चीज हमें नहीं देखने को मिल रही। Now in this case, so this is what a person sees that कि उसे यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन मिल रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पॉन्ड ऑफ वाटर है एंड इस पेड़ की रिफ्लेक्शन उसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, सो दैट इज नथिंग बट अ मिराज, इट इज जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ओके, सो द रीजन बिहाइंड दिस इज आल्सो अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आपको ये समझना होगा कि कभी भी जब ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसके 2 पॉइंट तो फिक्स रहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और जो मेरा रे ऑफ लाइट है वो हमेशा ट्रैवल कर रहा है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ठीक है। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है कंपेयर टू रेयर मीडियम, दैट इज रिलेटिवली। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिक्रीज हो रही है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज as it comes down, it keeps on decreasing. Okay, so this happens only during summer days. Okay, so let us understand in detail mirage. So it is an optical illusion observed in deserts on hot summer days. It is caused, इसकी reason क्या है, due to total internal reflection. Okay, for example, mirage seen in the desert during hot summer days. Now क्या ऐसा होता है during summer days? The temperature of air near the surface of earth is maximum, ठीक है, यहाँ पे on the surface of the earth is maximum, ठीक है।
ठीक है, and the temperature of other layers goes on decreasing as we go up. The temperature goes on decreasing, मतलब at uppermost यहाँ पे as we go up temperature थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, comparatively at the surface of the earth. ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जा रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होते जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होते जा रहा है मेरा, ठीक है, एज वी गो अप मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, आपको पता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हॉट समर डेज, एंड एज वी गो अप टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होना मतलब मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होना, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाना, ठीक है, डेंसिटी बढ़ जाना, डेंसिटी बढ़ जाना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एज वी ऑब्जर्व, यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ओके, इट इज अगेन coming from denser medium to rarer medium. So as it comes from denser medium to rarer medium, okay, तो जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है तब तक हो रहा है रिफ्रैक्शन, ओके, as soon as मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, as soon as it equals the critical angle, so मेरा रिफ्रैक्टेड रे उस केस में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाएगा क्रिटिकल एंगल से, सो उस केस में मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। Thus, a ray of light from the top of a tree, passes through an air of gradually decreasing refractive index. As a result, the ray of light gets refracted more and more away from the normal. ठीक है, at a particular layer, when the angle of incidence become greater than critical angle, तो यहाँ वो एंगल रहेगा जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस will be greater than the critical angle. So in this case, the total interreflection take place and the ray of light return into the same medium. Okay, it return to the same medium, that is, it is reflected upward. Now, when the reflected ray reaches the eye of the observer, it appears to him or her that it's coming from eye. Hence, the inverted image of a tree creates an impression of reflection from pond of water. I hope you have understood the concept of mirage here. Now, total internal reflection in prism. Okay, so the first here, the figure shows that a total reflecting glass prism turn lights to a 90 degree. Okay, so usually glass prism का जो critical angle होता है, it is around 42 degree. Okay, तो अगर मैं 42 डिग्री से क्रिटिकल एंगल, अगर 42 डिग्री, अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है मेरा, greater than critical angle होता है, तो मुझे total internal reflection मिलेगा. Okay, so when a ray of light enters normally at the face RP, okay, when a ray of light enters normally at the face RP of the prism, it strikes the face RQ at 45 degree. Okay, तो उसकी जो एंगल है वो 45 डिग्री है. Okay, now since the angle is greater than the critical angle, 42 degree for glass air interface, the total internal reflection takes place at RQ. Okay, and the reflected ray emerges normally through the face PQ. Okay, normally through face PQ.
ओके। तो ये जो ओवरऑल एंगल जो लिया है दैट इज टर्न, जो लाइट जो टर्न हुई वो है थ्रू 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली यू कैन से हियर दैट total reflection in the glass prism turn lights through 180 degree. Okay, so the first, the total interreflection on face, same it is same that यहाँ पे वो hit कर रहा है 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे यहाँ पे हिट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से टर्न लिया 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हिट कर रहा है अगेन 45 डिग्री पे, तो वापस से यहाँ पे टर्न लिया। So the overall turn is 90 plus 90. So overall turn it's 180 degree. Okay. We will study more also when we study the refraction in prism. तो हम लोग और पढ़ने वाले prism के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन देखते हैं जो है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो हमें इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर में, हमें सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। सो जो आपके एनसीईआरटी पे यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग पहले वो पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स व्हिच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर। ओके, सो हम लोग क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम लोग मैसेज दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, वीडियो मैसेजेस दे सकते हैं, ठीक है, साउंड दे सकते हैं, सिग्नल्स ऑडियो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हम यहाँ पे जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, ओके, बाय ट्रांसड्यूसर, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस जो ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होगा, ओके, जो कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस होगा वो करेगा मेरा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। जो सिग्नल ट्रांसमिट करने की जो काम जो करने वाला है वो ऑप्टिकल फाइबर है। और हमें सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम कर रहा है हम लोगों को ये देखना है, हम लोगों को ओवरऑल ऐसा वर्किंग नहीं देखना है, ये आप लोग अपने हायर एजुकेशन में जरूर पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर क्या क्या किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो वी कैन सी हियर दैट इट इज कोर, सो द मेन पार्ट ऑफ हियर इज कोर, ओके, एंड it is covered by cladding, ठीक है। Then it is covered by buffer coating, so it is made up by 3 layers. We can say that it is made up of 3 layers, okay. That is core, cladding, and the buffer coating. The buffer coating is used for the protection part. So an optical fiber is a transparent fiber which transmits light, introduced at one end and to the opposite end through the repeated total reflection. It's introduced at one end, ठीक है, to the opposite end through the repeated total internal reflection. So what are the materials? Main materials are there. So it is consist of cylindrical core of thousands of long and extremely thin strands of high quality glass or quartz. तो यहाँ पे कोर होगा, ठीक है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो हायर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जो कोर के ऊपर वाला पार्ट है वो है क्लैडिंग, ठीक है, इट इज हैविंग स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दैट ऑफ कोर, ठीक है। इसकी जो क्लैडिंग है यहाँ पे, जो क्लैडिंग ये वाला पार्ट जो है वो है क्लैडिंग, ठीक है। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है कंपेयर टू द कोर पार्ट। सो दिस इज माय कोर, this is my core and this is my cladding, okay, okay. The third material that is buffer coating, that is only used for the protection,
used for the protection, that is from environment. Okay, वर्किंग देख लेते हैं. The ray of light entering at one end of the cable undergoes series of total internal reflection. Okay, undergoes series of total internal reflection. Okay, it is because अभी ये हो क्यों रहा है, हमें पता है दो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए. तो ये वाला मेरा डेंसर मीडियम है, ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है शुड बी ग्रेटर देन द critical angle. Okay, so it is because angle of incidence is always greater than the critical angle for core cladding interface. Similarly, the light is transmitted to the other end of the cable without loss of intensity during its journey. Okay, so जो इसकी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है लाइट की, और या फिर हम लोग यहाँ पे इस केस में सिग्नल भी बोल सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफी स्ट्रांगली रहती है because it's traveling with the speed of light. Okay, so even if the optical fiber cable is bent into complicated shape, the critical angle will not be exceeded so that the light is transmitted practically undiminished to the other end. Okay, so here we finish the working of optical fiber. Optical fibers use कहाँ पे होते हैं हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं. It is used in the field of communications and the computer, used for transmitting and receiving electrical signals which are converted into light. The optical fibers are used for transmitting the optical signals and the two-dimensional pictures. The optical fibers are used for making medical investigation. Using an optical fiber, a doctor can visualize, examine the inside of the stomach, intestine. It is called endoscopy in medical science. ये आपने सुना होगा, ठीक है. Fourth point, the optical fiber in the form of photometric sensors are used for measuring the blood flow in the heart. Fifth point, the optical fibers in the form of refractometers are used to determine the refractive indices of the liquid. So there are many applications are there. तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ applications याद रखने based on your NCERT.